Hello students, today I am telling about imperfections or defects. Now, any deviation from the ideal arrangement of constituent particles in a crystal is known as defects or imperfection. It is due to heat absorbed by a crystal from the surrounding imperfections कैसे डेवलप होता है? इट इज ड्यू टू हीट एब्जॉर्ब बाय अ क्रिस्टल फ्रॉम द सराउंडिंग पार्टिकल्स मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड आल्सो इंक्रीज द वेलोसिटी एंड ऑन कूलिंग दे हैव नॉट sufficient time to arrange themselves, so defects are created. Now defects further divided in two parts. First part is point defects. Point defects, suppose that in a crystal a arrangement of a particular points is this perfectly arranged this when imperfections कैसे डेवलप हो जाता है a particular particle के अराउंड में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट्स डिफरेंट हो जाता है सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर पार्टिकल और इसके अराउंड इस तरह से डेविएशन डेवलप हो जाता है तो यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट डेवलप हो जाता है तो दिस मीन्स एनी डेविएशन एग्जिस्ट फ्रॉम आइडियल arrangement around the points is known as point defect. Next is line defect. Line defect, suppose that in a crystal ideal arrangement of constituent particles in a straight line of this type. अब जब इसमें डिफेक्ट्स डेवलप हो जाता है तो इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है इस तरह से ऐसे इस तरह से इनमें डिफेक्ट अरेंजमेंट्स हो जाते हैं इसका रीजंस क्या है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो स्टेट टू में ना होकर डेविएट हो जाते हैं फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट्स तो दिस मींस when the deviation from ideal arrangement the deviation from ideal arrangement exists
entire the row of lattice points is known as line defect. Next is intrinsic defects. Intrinsic defects are thermodynamic defects or stoichiometric defects. All defects are same but names are different. In these defects, the ratio of cations to the anions remains same as represented by ideal chemical formula. In these defects, first is vacancy defect. वैकेंसी डिफेक्ट्स के पहले हम समझ लेते हैं कि सपोज दैट ये एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो साइड्स है, दिस साइड इज नोन एज लैटिस साइड एंड दिस साइड इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइड. First, which is very important. So in vacancy defect, some lattice sides are vacant, is known as vacancy defect. Vacancy defect in some lattice sides are vacant. Is said to be vacancy defect. It is due to heat absorbed by the crystal from the surrounding. Suppose that, for example, आप यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं, like it is a crystal and A plus B minus A plus B minus A plus B minus A plus A plus B minus A plus B minus. Suppose that
it is a crystals. यहाँ पे क्या है कि some lattice sites are vacant. Suppose that this is known as vacancy defect. Now next is a interstitial defect. Interstitial defect. Interstitial defects, that means when constituent particles present at interstitial site is known as interstitial defect. When constituent particles present in interstitial site. Suppose that it is a crystal, this and any constituent particles present at interstitial. So it is known as interstitial defects. Now further